Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Sunyavani Vastada Desatarine Om Jnana Timirandasya Jnana Jnana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha
Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Parakamalam Shri Guru Vaisnavansya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Manatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sarvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Sri Visakhampitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisabhano Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 4, The Creation of the Fourth Order, Chapter 18, Prithu Maharaj milks the Earth planet. Text number 15. हरे कृष्णा श्रीमद् भागवतम से पाठ कर रहे हैं 14 सेकंड 18वां अध्याय अध्याय का शीर्षक है पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन और श्लोक संख्या 15। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Vatsam Suragana Indram Somam Aduduham Hiranmayena Patrena Viryam Ojo Valampaya Kritva Vatsam Suragana Indram Somam Aduduham Hiranmayena Patrena Viryam Ojo Valampaya Kritva Vatsam Suragana Indram Somam Aduduham Hiranmayena Patrena Viryam Ojo Valampaya Kritva Vatsam Suragana Somam Aduhanam Hiranmayena Patrena Viryam Ojo Valampaya Mataji's
Word for word. Hare Krishna. Okay, go ahead. Word for word meaning? Kritva, making. Vatsam, calf. Suraguna, the demigods. Indram, Indra, king of heaven. Somam, nectar. Uduluhan, they milk out. Hiranmayena, golden. Patrena, with a pot. Viryam, mental power. Oja, strength of the senses. Balam, strength of the body. Vaya, milk. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki. All the demigods made Indra, the king of heaven, into a calf, and from the earth they milked the beverage Soma, which is nectar. Thus they became very powerful in mental speculation and bodily and sensual strength. धन्यवाद। समस्त देवताओं ने स्वर्ग के राजा इंद्र को बछड़ा बनाया और उन्होंने पृथ्वी में से सोम रस अर्थात अमृत दूध लिया। इस प्रकार वे मानसिक, शारीरिक तथा इंद्रिय शक्ति में अत्यंत बलशाली हुए। If your cell phone is on, please put in a flight mode or silence. Otherwise, you have to sponsor the next Sunday feast program. कृपया मोबाइल फोन साइलेंट कर लीजिए या एयरलाइन मोड पे कर लीजिए। कृपया मोबाइल फोन साइलेंट कर लीजिए, अन्यथा आपको अगले रविवार का प्रीति को स्पॉन्सर करना पड़ेगा। Or a big cake for everyone. Translation. All the demigods made Indra, the king of heaven, into a calf, and from the earth they milked the beverage Soma, which is nectar. Thus they became very powerful in mental speculation, bodily and sensual strength. Purport. It's not a long purport. Okay. हरे कृष्णा जी की गाड़ियां यहाँ सामने खड़ी हैं, खासकर मंदिर के आसपास प्लीज चाबी दे दीजिए। गाड़ी ऐसे बाहर ये तो अच्छा है, पहले पार्क में लेके जाएंगे। प्लीज गाड़ी आसपास किसी खड़ी है, सिर्फ मंदिर के सामने तो ठीक है। Purport. In this verse, the word Soma means nectar. Soma is a kind of beverage made in the heavenly planets from the moon, from the kingdoms of the demigods, in the various higher planetary systems. By drinking this Soma beverage, the demigods become more powerful mentally and increase their sensual power and bodily strength. The words Hiranmayena Patrena indicate that this Soma beverage is not an ordinary intoxicating liquor. The demigods would not touch any kind of liquor, nor is Soma a kind of drug. It is a different kind of beverage available in the heavenly planets. Soma is far different from the liquors made for demoniac people, as explained in the next verse. इस श्लोक में सोम का अर्थ अमृत है। सोम एक प्रकार का पेय है जो स्वर्ग लोक में
चंद्रलोक से लेकर विभिन्न पुष्कर ग्रहमंडलों में देवताओं के लोकों तक बनाया जाता है। सोम नामक इस पेय को पीकर देवता मन से, इंद्रियों से तथा शरीर से अधिक शक्तिशाली होते हैं। हिरण्यमयी प्रेरणा शब्दों से सूचित होता है कि यह सोमरस सामान्य मादक शराब नहीं है। देवता किसी प्रकार का मादक पेय छूते तक नहीं है और ना ही सोम कोई दवा है। यह एक भिन्न प्रकार का पेय है जो स्वर्ग लोक में उपलब्ध है। असुरों द्वारा तैयार की जाने वाली शराब से सोम सर्वथा भिन्न है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। कृत्वा वत्सं सुरागना इंद्रं सोमं अदुदुहान हिरण्मयेन पत्रेण वीर्यं उजो बलं पया. So the demigods, they made Indra, as mentions here in the translation, the king of heaven, into a calf. And from the earth they milked the beverage Soma, which is nectar. सभी देवताओं ने स्वर्ग के राजा इनको बचा बनाया और पृथ्वी में से सोमरस का दूध लिया। So to extract nectar from the earth, they made King Indra into a calf. तो पृथ्वी से अमृत निकालने के लिए उन्होंने राजा इंद्र को एक बछड़ा बनाया। And from what came from the calf is called Soma. और जो बछड़े से निकला उसको सोम कहते हैं। पृथ्वी से निकला उसको सोम कहते हैं। Soma is mentioned in the Rig Veda as part of the descriptions about Ayurveda. तो ऋग्वेद में जो आयुर्वेद का सेक्शन है वहाँ पर सोम के बारे में वर्णन किया गया है। Rig Veda means hymns. ऋग्वेद का मतलब हुआ गुणगान। As we've heard, originally there is one Veda and then it's been divided into four. मूलतः तो एक ही वेद है पर उसका आगे चार में विभाजन किया गया है। Sama, Atharva, Rig and Yajur Veda. Yes. Prabhupada says that all the knowledge that we need to know is in the Vedas. श्री भगवान कहते हैं कि जो भी ज्ञान जानने योग्य है वो सब वेदों में दिया गया है। Because the Vedas is compared to the mother. वेदों को माता से उसका तुलना की गई। If you want to know who is our father, then we have to ask only one person. You don't know who was it? Who is our father? We have to ask one person who knows very well who is our father. तो अगर हम जानना चाहते हैं अपने पिता के बारे में तो केवल माता ही ये बता सकती है कि पिता कौन है। If you want to know who is your father, you don't go outside and ask every person, do you know my father? जब आप अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो बाहर निकलकर हर किसी से पूछते हैं कि क्या मेरे पिता को जानते हैं? For sure, there is only one person who knows our father very well, and that is our mother. निश्चित ही है कि एक व्यक्ति है जो हमारे पिता को अच्छे तरीके से जानता है, वो है हमारी माता। So similarly, Vedas means knowledge. इस तरह वेदों का अर्थ हुआ ज्ञान। If we need to know any department that exists about Gyan or knowledge, it can be found in the Vedas. अगर हम ज्ञान के किसी भी विभाग को जानना चाहते हैं तो वेदों के माध्यम से जान सकते हैं। And ultimately, the conclusion of the Vedas is Vedaischa sarvaya aham eva vidya. Of all the Vedas, I am to be known. Krishna, who is the compiler and ultimately the knower of the Vedas. और आखिर में वेदों का जो पूरा सार है वो यही है कि वेदों में जानने योग्य है वो कौन है? कृष्ण। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि वेदों में जानने योग्य नहीं हूँ।
So this Soma is specifically mentions in this sloka, and Prabhupada says that Soma means nectar. तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सोम का अर्थ हुआ अमृत। So this Soma is the beverage that they make and they drink in the moon planet, तो चंद्रलोक में ये सोम बनाते हैं और पीते हैं। Chandraloka. चंद्रलोक बनाते हैं। They know the formula. This is a kind of herbal mixture. तो ये एक हर्बल मिक्सचर है और इसका फॉर्मूला जानते हैं। Yes, like they're very expert chemists in Chandraloka, and they distribute them also and in a container, golden pot, to the demigods. तो रसायन शास्त्र में बहुत अभी पंडित हैं चंद्रलोक के लोग, तो वो इसको बनाना जानते हैं और फिर देवी देवताओं को सोने के बर्तन में इसको देते हैं। Now, as we've heard from here, that this nectar, and we've heard also from the Rig Veda, that this nectar is somehow not really intoxicating. तो यहाँ पर वर्णन किया गया है और ऋग्वेद में बताया कि ये जो अमृत है सोम नाम का, ये नशा नहीं है किसी तरह का। Some they claim that they can still make this in the earthly planet even nowadays. कुछ लोग ये कहते हैं कि हम पृथ्वी पर भी बना सकते हैं इसको, But it is not possible. परंतु ये संभव नहीं है। That is mental speculation. केवल मानसिक उनका अनुकरण है। Because this only can be made in Swargaloka, especially moon planet is in Swargaloka. क्योंकि सोम जो है केवल चंद्रलोक में, क्योंकि स्वर्ग है चंद्रलोक वहाँ बताया जा सकता है। The moon that we see actually seems to be close, very close to us, but Prabhupada says that it belongs to the heavenly planets and the astronauts, these spacemen from United States of America, they claim that they went to the moon, but Prabhupada says no, they cannot go there. ये चंद्रलोक में हम देखते हैं चंद्र बहुत नजदीक नजर आता है, परंतु श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चंद्र है वास्तव में स्वर्ग लोक है और बहुत अधिक दूर है। Because if they went there, then they will see other living entities as well. तो अमेरिका के एस्ट्रोनॉट बोलते हैं कि वो चांद पर गए, पर प्रभुपाद कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जाते तो वो और जीवात्मा को देख पाते वहाँ पर। In all the entire creation, both material and spiritual worlds, living entities exist, both moving and non-moving. पूरी की पूरी सृष्टि में चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, जीवात्माएं हैं और नॉन मूविंग मूविंग दोनों हैं। चल और चल दोनों हैं। Prabhupada says also even in the fire, there are living entities. अग्नि में भी जीवात्माएं हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं। The sun god lives in the sun planet, which considering in our regular temperature, we will not be able to exist there. तो सूर्य देव हैं, वो तो वहीं पर सूर्य में ही रहते हैं और वहाँ का तापमान का अधिक ही हमको नहीं रह पाएंगे वहाँ पर। In the moon planet, there is Chandra also, the predominating deity of the moon planet. तो चंद्रलोक पे चंद्रदेव निवास करते हैं। So if there is a king, there must be also the subjects. तो अगर राजा है तो प्रजा भी होगी। Because the king doesn't travel alone. He's always accompanied by his queen or his armies and his assistants. क्योंकि राजा कभी अकेला नहीं चलता, उसके साथ उसकी रानी होती है, उसके कुछ असिस्टेंट सहायक होते हैं और प्रजा होती है। So similarly, in the moon planet, there are also living entities, but their body is suited to be able to live and exist in the moon. इसी तरह चंद्रलोक पे भी जीवात्माएं हैं और उनका शरीर इस तरह से डिजाइन है कि वहां पर वो रह सकते हैं, वहां के वातावरण में रह सकते हैं।
And in every nook and corner of the material creation, there is a living entity in one of the 8,400,000 species of life. तो भौतिक सृष्टि के कोने कोने में कोई ना कोई जीवात्मा है 84 लाख में से। So these living entities in the moon planet, they know the formula how to make this Soma ras. तो जो चंद्रलोक के निवासी हैं वो जानते हैं सोमरस बनाना। This ras means nectar. रस का मतलब हुआ रस। Maybe if you go to the Himalayas, maybe you'll find some of these herbs, and you can, if you know how the combinations, then you'll be able to make them. उसका हिमालय पर्वत पे जाएं तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे चीजें आपको मिल जाएं जिससे आप फॉर्मूला बनाकर इसको बना पाएं। So this ras or this nectar, it promotes immortality. तो इससे अमृत हो जाता है, मृत्यु से पार हो जाता है। Of course, not immortality that you'll be able to live eternally. Your life will just be prolonged. तो ऐसा नहीं है कि पीने से शाश्वत रूप से हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे, परंतु ये है कि जीवन अति बढ़ जाए। It's like in the heavenly planets, the time scale is not the same as we have here. जैसे स्वर्ग लोकों में जो समय है वो उसकी गणना वैसी नहीं है जैसे कि हमारे यहाँ पर। Our 6 months here is 1 day there. हमारे यहाँ के 6 महीने वहाँ का 1 दिन के बराबर। What to say, Brahmaloka or Satyaloka. क्या बात करें हम लोग से कह सकते हैं? Lord Brahma lived for 311 trillion years of 100 years of us. तो ब्रह्मा जी 311 ट्रिलियन ईयर्स रहते हैं। 100 years of him is 311 trillion years of us. उनके ब्रह्मा जी के 100 साल हमारे 311 ट्रिलियन ईयर्स के बराबर है। His 1 day, that means 12 hours, is 4.3 billion years. तो ब्रह्मा जी का जो 12 घंटे हैं वो 43,20,000 साल के बराबर। Plus another 12, that means 8.6 billion years. 86 लाख साल उनका 1 दिन है। It's unimaginable. तो हमारे लिए अकल्पनीय है। Like nowadays, oh, that's my phone. I cannot sponsor the feast. I'll come for the feast, but I cannot sponsor. I'll put this into silent now. Okay. So, Lord Brahma lived for so long. And for us, his 100 years is also our 100 years, but it is relative. तो ब्रह्मा जी के भी 100 साल हैं, हमारे भी 100 साल हैं, पर दोनों का जो मापदंड है। So by drinking this Soma ras or Soma beverage, one can live for long time. तो सोमरस पीने के बाद एक व्यक्ति बहुत समय तक जीवित रह सकता है। As Prabhupada says, this Soma ras is not intoxicating. बताते हैं कि सोमरस जो है वो नशा नहीं है। There is a misconception that if you take this Soma ras, you'll become intoxicated. इन पर लोग सोचते हैं बोलते हैं कि सोमरस का मतलब नशा है। You can take only 1 drop of this, and the effect is that you somehow become energized, or you become, your thinking becomes clear, and your decision making becomes very, very effective. तो केवल एक बूंद सोमरस की लेने मात्र से बहुत अधिक शक्ति आ जाती है, एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो जाता है और अपने कार्य अच्छी तरीके से कर पाता है। Just like Shilajit, you know Shilajit? Shilajit, you go in the Himalayas, 18,000 feet elevation, they can get this, some kind of, from the rocks, it comes out, and they take a little bit of this, and you become very, very strong and energetic. जैसे हिमालय के पर्वत पे बहुत ऊंचाई पर जाएंगे और वहाँ रॉक्स में से कुछ निकलता है, चट्टानों में से कुछ निकलता है, उसको थोड़ा सा लेने से बहुत अधिक शक्ति आ जाती है। Anyone of you heard Shilajit? Yes?
Come on, it's very famous in India. All the cricket players, they take this Shilajit. So this Somaras is different though. पर इस सोमरस शिलाजीत से अलग है। It makes you powerful mentally तो ये आपको मानसिक रूप से शक्तिशाली बना देता है and increased sensual power and bodily strength. और इंद्रियां और शरीर में भी शक्ति दे देता है। If this is an intoxicant, of course, King Indra, he takes gallons and gallons of this. तो इंद्रदेव को बहुत अधिक देते हैं, मात्रा में लेते हैं इसको। So if you take too much, maybe you become intoxicated. तो बहुत ज्यादा लेंगे, इंद्रदेव बहुत बड़ी मात्रा में लेते हैं तो हो सकता है नशा आ जाए उनको। Because King Indra, he is the king in the heavenly planet, so he has a big supply of this. क्योंकि वो राजा में स्वर्ग का विश्व से बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। But normally, no, if one takes Soma Ras, only a little bit and it'll become so powerful. Usually they use this before going to war. There is a war between the demigods and the demons. So before the war, the demigods will also take this to make them strong. तो जब भी युद्ध होगा, वह होता है देवताओं और असुरों के बीच में, देवता लोग इसको लेते हैं ताकि वो शक्तिशाली बने। So they have very extra power, Shakti. ताकि उनके पास बहुत अधिक शक्ति हो। Now the demons, they also take some kind of beverage, but it is intoxicating, like liquor असुर भी कुछ पेय लेते हैं, पर वो शराब की तरह नशे वाला है। or wine. या वाइन की तरह है। So instead of become mentally powerful, you become more disillusioned and you cannot make proper decision. तो नशे का पदार्थ लेने से बजाय इसके कि मानसिक रूप से शक्ति आए, सोचने की शक्ति बल्कि कम हो जाती है। So Somaras, usually they put them in a golden container, and the liquor or the wine that's been taken by the Asuras, they put this in iron container. तो जो देवता है जो सोमरस पीते हैं, वो सोने के बर्तन पीते हैं, और जो असुर हैं, वो जो शराब के नशे का पदार्थ पीते हैं, वो लोहे के बर्तन पीते हैं। Both are liquid, but gold, and compared this liquid put into a gold, into an iron. So both are both metal, but golden is more precious. दोनों ही पीने के पदार्थ हैं और दोनों ही बर्तन हैं, परंतु एक जगह पर सोम है और सोने का बर्तन है, और दूसरी जगह पर नशे का शराब है और लोहे का बर्तन। This was put in Hiranmayena Patrena, golden pot. So which means it is very, very valuable, it's very, very precious. तो बहुत ही कीमती बर्तन में डालते हैं लोग। Unlike the liquor, instead of making you strong, you think you're strong, but you don't have any strength. You cannot even get up. शराब पीने के बाद व्यक्ति को सोचता है कि शराब लेकर है, सोचता है इससे मेरी शक्ति बढ़ेगी, पर वास्तव में भ्रम में आ जाता है, वो इतना दुर्बल हो जाता है कि कई बार उठ भी नहीं पाता। So present age, the liquor and this wine is intoxicating, and you can purchase this in every corner. तो आधुनिक समय में जो शराब है, ये तो हर जगह पे मिल जाती है। It's like if you go to Gurgaon, their liquor store is like a shopping mall. तो गुड़गांव में जाएंगे, It's big, it's big, bigger than this temple. इस मंदिर से बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल हैं। Have you seen in Gurgaon? Yeah. Oh, yeah, in Faridabad also, but not as big as in Gurgaon. Gurgaon is like every 10 feet there is a liquor store. हर 10 फुट पे गुड़गांव में शराब का भंडार है। Not in UAE, in United Arab Emirates. No, liquor and there's a ban, but you can still purchase them. Ban, it's banned. In UAE. UAE.
In Middle East, आप मिडिल ईस्ट में जाएंगे, यूएई में जाएंगे, तो वहाँ पर भी मिलता है, हालांकि वो बैंड है, पर कहीं छुप के मिलता है। yeah, if they want to drink, they can go to Bahrain. It's open. तो बहरीन जाना पड़ेगा, वहाँ जाके मिल सकते हैं आपको। Or you can go to the hotel. If you have a lot of dirhams, you go to the hotel. You can buy this liquor. या बहुत दिराम है तो होटल में जाकर खरीद सकते हो, पी सकते हो। Or in the black market, you can buy and then you can drink at home. या फिर ब्लैक मार्केट में खरीद के घर में जाकर पी सकते हैं। So this is demoniac, this kind of intoxicants. तो ये जो शराब आदि है, ये आसुरी है। It says that if a brahmana will drink liquor, then the agents of Yamaraj will punish him by having him drink very, very hot beverage. तो यदि कोई व्यक्ति शराब पीता है, नशा करता है, तो जो यमदूत हैं वो बहुत जबरदस्त सजा देने वाले हैं और बहुत ही गर्म पेय पदार्थ है उसको जबरदस्ती पिलाने वाले हैं बाद में। So this liquor, which is the opposite of Soma, it puts you in the modes of passion and ignorance. जो शराब है ये व्यक्ति को रजो और तमो तक लेकर चली जाती है। And Soma puts you to the modes of goodness. जो सोम है वो भी पेय पदार्थ है, पर वो सत्व तक लेकर जाती है। And there is some intoxicants that will they say that they make your consciousness expansion experience. तो कुछ लोग बोलते हैं कि कैसे पदार्थ है, अब उसको पिएंगे तो आपकी चेतना अनुभूति और अधिक बढ़ चढ़ के कर सकेंगे। But yet all of these intoxicants will only produce illusion and delusion. परंतु जो ये जो शराब आदि पदार्थ हैं ये केवल भ्रांति पैदा करेंगे। But not somaras. परंतु सोमरस के साथ ऐसा नहीं है। It has a different effect. सोमरस का दूसरा प्रभाव है। So the demigods will not touch anything else besides somaras. तो देवी का केवल पीने के लिए सोमरस ही इस्तेमाल करते हैं, नशे वाला कोई पदार्थ नहीं। It says here, nor Soma is a kind of drug. और ना ही सोम कोई दवाई है। Some say Soma is like some kind of mushroom, magic mushroom, psilocybin. तो कई लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि सोम मशरूम की तरह से है। In America, I think in India also they take this. You know, this kind of mushrooms that will put you in hallucination. तो अमेरिका में और भारत में किस तरह के मशरूम वो लोग लेते हैं कि उसमें व्यक्ति भ्रम में आ जाता है, चक्कर घूमते हैं। But Prabhupada says, no, this Soma is far different from the liquors. प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, सोम रस जो है वो शराब आदि से बहुत ही बिल्कुल अलग है। Or any intoxicants. या किसी भी नशे के पदार्थ से अलग है सोम रस। These intoxicants or other liquors or wine, this is for demoniac people. तो ये जो नशा है ये आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के लिए। But there is one nectar which is beyond the modes of material nature. परंतु एक अमृत है जो प्रकृति के तीनों गुणों के ऊपर है। What is it? Chanting the Hare Krishna Maha Mantra. It's like Lord Chaitanya Mahaprabhu says, my spiritual master considered me a fool. जैसे कि चैतन्य परंतु इन तीन गुणों से ऊपर भी एक नशे का पदार्थ है और वो है हरिनाम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरे गुरु ने कहा कि तुम मूर्ख हो। And my only hope is to chant the holy name of the Lord. और मेरी एकमात्र आशा है, मेरे गुरु ने बोला कि तुम जाकर हरिनाम का जप करो। And even Srila Rupa Goswami says that this chanting of the Hare Krishna Maha Mantra, I don't know what is in there in the chanting of the two syllables Krishna, that whenever I utter this, it is like nectar, and I wish that I have thousands of tongues and thousands more of ears
और श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि मुझे पता नहीं क्या नशा है इन दो शब्दों में कृष्णा, कि जैसे मैं इसको बोलता हूँ मुझे लगता है मैं पागल हो जाता हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी हजारों जीवाएं क्यों नहीं है और हजारों हजारों कान क्यों नहीं है। One who's chanting the holy name of the Lord in the topmost level, that means the purified Vishuddha Sattva, then he'll be able to relish the chanting of the holy name of the Lord, and he will not be able to contain himself, that he will continuously chant 24 hours. जब कोई विशुद्ध सत्य के धातु पे आ जाता है, शुद्ध भक्ति के धातु पे आ जाता है, तब जो उसको हरिनाम का आस्वादन होता है वो अकल्पनीय अतुलनीय है, और उसको इतना रस मिलता है कि वो 24 घंटे अपने आप को रोक नहीं सकता हरिनाम करने से। Lord Chaitanya Mahaprabhu says that the Supreme Lord has invested unlimited energies, his energies in the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान ने हरे कृष्ण महामंत्र में बहुत ही अधिक मात्रा में अपनी सारी शक्तियां डाल दी। But he's saying, Nam Nam Akari Bahudani Nija Sarva Shakti. Sarva Shaktis. तो इस हरिनाम में सारी शक्तियां हैं। Sarva Shaktis means all, isn't it? Sarva. सर्व शक्ति, सारी शक्तियां हैं नाम। But how is it? And he says himself, but I'm so unfortunate, I don't have any taste for chanting. परंतु महाप्रभु कहते हैं कि मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरा तो कुछ भी रुचि नहीं है हरिनाम। Srila Prabhupada gave an example of a person who had jaundice. श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं एक ऐसे व्यक्ति का जिसको पीलिया का रोग है। Oh, what is that in Hindi? Jaundice? पीलिया। Piriya. Yeah. I remember when I was a young boy, I contacted this disease of the liver. It is disease of the liver, right? जब मैं छोटा बालक था तो मुझे ये लिवर का डिजीज होता है, पीलिया मुझे हुआ था। My skin yellow color, my eyes yellow color, my urine very, very yellow. Everything yellow. मेरी त्वचा पीली हो गई, मेरी आंखें पीली हो गई, मेरा मुंह पीला हो गया, सब कुछ पीला हो गया। Maybe I only see yellow. I don't see red or blue or green. मैं सब तरफ सिर्फ पीला देख पाता था, ना लाल ना नीला कुछ नहीं। And the sweets taste very bitter. और पीले के रोग में जो मीठा है वो भी खाने में बहुत तीखा लगता है। And the medicine for this actually is sugar. और इसके लिए जो दवाई है वो है मीठा, especially sugar cane. खास तौर पे गन्ना। But it tastes very bitter. Sugar cane is very sweet, isn't it? गन्ना तो बहुत मीठा होता है, पर पीले के रोग में खाएंगे तो बड़ा कड़वा लगता है। So, but gradually, you take this medicine, sugar candy, which what do you call misri? Misri is the sweetest form of sugar in candy form. परंतु धीरे-धीरे आप इसको खाते रहेंगे, मिश्री को जो कि चीनी का सबसे अधिक मीठा रूप है, मिश्री उसको खाते रहेंगे। So you take this misri, it is bitter, but slowly it increases your taste, that this mystery will come to its original taste of being sweet. तो पीले के रोग में सब कुछ इतना कड़वा होता है कि मिश्री जैसा जो मीठा पदार्थ है वो भी कड़वा लगता है, परंतु फिर भी उसको लेते रहेंगे तो कुछ समय के बाद हमारा स्वाद सही हो जाएगा, और फिर मिश्री का जो मूल रस है वो है, जो स्वाद है उसका आभास होगा। So how is it that Rupa Goswami, one of the 6 Goswamis, saying that this chanting of the holy name of the Lord is like nectar, real nectar? तो ऐसे कैसे है कि श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि जो हरिनाम है उसका जब आस्वादन करते हैं तो उनको बिल्कुल अमृत के समान लगता है। But why is it very bitter? It doesn't taste really nectar for us. परंतु हमें तो अमृत नहीं लगता, हमें बहुत कड़वा लगता है ना, because of our offenses. क्योंकि हम अपराध करते हैं। It says in the Shastra that there are 3 levels of chanting the holy name of the Lord. शास्त्र में बताया गया है
ये हरिनाम करने के 3 धरातल हैं। There is the beginning stage, which means the nama aparad. प्रारंभिक अवस्था जिसको नाम अपराधी कहते हैं, This is the offensive stage. जिसमें अपराध होते हैं। There is the middle stage, which is namabhas, or the clearing stage. और जो बीच का धरातल है वो नामाभास है, जिसमें हमारी सफाई होती है और नाम अपराध से बचते हैं। And there is the supreme stage, which is considered to be transcendental stage. और सर्वोच्च धरातल है जो कि दिव्य धरातल है। Para bhakti, that means Sudanam, chanting the holy name of the Lord in purified stage. जिसमें हरिनाम का जप शुद्ध भाव से किया जाता है। So, because the root cause we are not able to get rid of, that's why we are, majority of us, I don't think all of us, maybe some of you are in the Navabhas or even in the Sudanam stage, but most of us are in the Nama Aparad stage because of our inattentiveness while chanting the Hare Krishna Mahamantra. तो हो सकता है कि आप ऐसे कुछ नामभास या शुद्ध नाम की धरातल पर अधिकांश जो हम लोग हैं वो नाम अपराध की स्थिति में हैं, जिसमें हम क्योंकि ध्यानपूर्वक जप नहीं करते। And especially we are offensive towards the devotees. और विशेषतः क्योंकि हम भक्तों के प्रति अपराध करते हैं। Lord Chaitanya Mahaprabhu, he says, we only need 2 things to do in order to go back home, back to Godhead. श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवत जाने के लिए केवल 2 चीजें करने की आवश्यकता है। To continuously chant the holy name of the Lord and not to criticize anybody. पहला है निरंतर हरिनाम का जप करना और दूसरा है किसी की भी आलोचना नहीं करना। Well, I said anybody, but specifically the Vaishnavas, because anybody also means non-devotees. किसी भी का मतलब हुआ जो भक्त है, क्योंकि किसी में Yeah, well, I said anybody because anybody means includes Vaishnavas and non-devotees or non-Vaishnavas. तो किसी भी का मतलब हुआ कि वैश्य भी हो सकते हैं या फिर साधारण लोग भी हो सकते हैं। So we must be very careful. तो हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। When we chant the holy name of the Lord, to have its full effect, we need to chant and hear the holy name of the Lord, because the name of the Lord is not different than Lord Krishna. यदि हम चाहते हैं कि हम जप करते हैं नाम का उसका पूरा लाभ मिले, तो फिर हमें ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए, क्योंकि नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं है। Yes. When we chant the holy name of the Lord purely, then we'll be able to see Krishna face to face. क्योंकि जब इसीलिए जब हम हरिनाम का जप करेंगे शुद्ध भाव से, तो फिर हम कृष्ण को अपने सामने देख पाएंगे। And because we are not, or maybe some of you are in that platform, but most of us are still in the Nama Aparad stage, that chanting the Hare Krishna Maha Mantra tastes very bitter. We don't even want to chant. और क्योंकि हम में से अधिकांश वक्त हो सकता है कि नाम अपराध की बातों पे हों, इसके नाम जप करने का एक बहुत ही कड़वा लगता है। इतना बुरा होता है कि हमारा मन भी नहीं करता कि हम जप करें। It's like in Vrindavan, it is normal for one to chant 1 lakh holy name of the Lord. जैसे वृंदावन में बहुत साधारण है कि कोई व्यक्ति 1 लाख नाम में 64 माला करता है। Srila Prabhupada has prescribed us to chant 25,000 times the holy name, 16 rounds minimum every day. श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए जो मापदंड दिया है वो 25,000 नाम यानी 16 माला का दिया है। And it's not so easy to chant even 25,000 times. परंतु 16 माला करना भी आसान नहीं है। We fall asleep while chanting. हरिनाम करते करते हम सो जाते हैं। It's better that we chant while sleeping than sleep while chanting. बजाय इसके कि जप करते करते हम सोएं, अच्छा है कि सोते सोते हम जप करें। Yes, a self-realized soul, a pure devotee of the Supreme Lord, is always engaged even while sleeping.
जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो सदैव भगवान की सेवा में लगा होता है, सोते टाइम भी सेवा कर रहा होता है। You've seen the video of our Guru Maharaj. He's doing arti while sleeping. आपने वीडियो देखा हमारे गुरु महाराज का जो सोते में आरती कर रहे हैं, Because he's always in that level of consciousness, Krishna consciousness. क्योंकि उनकी चेतना का धारी सबसे सर्वोच्च है, कृष्णा चेतना। There is no difference between the waking state and the sleeping state for a fully Krishna conscious person. जो पूर्णतः कृष्ण भावनामय भक्त है, उसके लिए सोने और जागने में कोई अंतर नहीं, दोनों में सेवन लगा है। For a conditioned soul, there is a difference. Sleep means mode of ignorance. परंतु जो बद्ध जीव हैं, उनके लिए सोने का मतलब हुआ तमोगुण। I've seen our Guru Maharaj, like he will be dictating, he'll be taking rest. I thought he's already asleep. But then immediately, it's like a little bit of temporarily not saying anything, but then he will wake up and then he'll continue from where he left off. तो महाराज कह रहे हैं कि आपने हमारे गुरु महाराज को देखा है कि वो कुछ बता रहे हैं, फिर मुझे लगता है कि महाराज बहुत थके सो गए, परंतु ऐसा नहीं है, बस कुछ क्षण के लिए वो शांत हुए, फिर एकदम से जो बोल रहे थे उसको आगे बोलना शुरू कर दिया। I thought he's already sleeping. तो मुझे लगता था कि महाराज सो गए, but he's fully awake. परंतु तो पूरी तरह से जगे हुए हैं। I was gonna put down the computer and I thought everything is done. No. तो महाराज डिक्टेट कर रहे थे, गुरु महाराज डिक्टेट कर रहे थे, तो महाराज कहते हैं मुझे लगा कि तो महाराज सो गए, तो अपना कंप्यूटर बंद करने वाला था। And oftentimes he says, "Oh, okay, I'm just gonna go a little bit of rest," but then he's not really resting. और कई बार गुरु महाराज बोलते हैं कि मैं कुछ विश्राम करने जा रहा हूँ, पर विश्राम तो नहीं करते थे वास्तव में। A Krishna conscious person, his senses are fully awakened. जो कृष्ण भावना भक्त है, पूर्णतः कृष्ण भक्त, उसकी इंद्रियां सदैव जागृत हैं। There is never a time that he'll be in the mode of ignorance and passion. कभी भी ऐसा नहीं होगा, कोई क्षण ऐसा नहीं होगा जब वो रजोगुण या तमोगुण में होगा। So as long as we are in the mode of passion and ignorance, then we'll not be able to come to the platform of pure goodness in chanting the Hare Krishna Maha Mantra, and all of our activities will still be under the modes of material nature. परंतु जब तक हम जैसे जीव रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में रहेंगे, तो हम कभी शुद्ध सुख के कार्य में नहीं आ पाएंगे। जो भी कार्यकलाप करेंगे भी, वो रजो और तमो के प्रभाव में ही रहेगा। That's why Srila Prabhupada says that at least we should come to the platform, the mode of goodness. इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कम से कम सतोगुण के घाट पे आना चाहिए। And don't remain in the neophyte, prakrita bhakta. Come at least to the madhyam platform, madhyam bhakta. प्रभुपाद कहते हैं सदैव प्राकृत पद पर बने रहना, मध्यम घाट तक ना। Because in prakrita bhakta, no development of love of God will come. क्योंकि प्राकृत भक्त की स्थिति में कृष्ण प्रेम में वो बिल्कुल जागृत नहीं होगा। Prakrita bhakta means materialistic devotee. प्राकृत भक्त का मतलब हुआ भौतिक वाली भक्त। Neophyte. नियोफाइट प्राकृत भक्त। So when he comes to the temple, he only sees the Lord and himself. He doesn't see anybody. जब ऐसा भक्त मंदिर आता है तो केवल अपने आप को देखता है, भगवान को देखता है, और कोई नजर नहीं आता उसको। Just like a horse. जैसे घोड़ा। You have a blind. You've seen the horse, Tonga? Yeah? The Tonga, the horse, the horse cannot see what's here. I cannot see the devotee sitting there. And I cannot even see a Gopeshwar Prabhu here. Because I put my thing like this. I only see Yasoda Damodar right in the front, or who's ever in this vision. So Prakrita, Neophyte, Bhakta is like this. He only sees there Krishna and himself. तो एक प्रारंभिक स्थिति का भक्त कैसे होता है कि वे बस अपने को देखता है और कृष्ण को देखता है। जैसे घोड़ा होता है, तांगे का घोड़ा, तो घोड़े के दो तरफ यहाँ से लगा होता है, जिसको ना दाएं देखता ना बाएं। जैसे मैं दाएं में जो सोए हुए हैं उनको नहीं देख पा रहा, और बाएं में गोपीश्वर दास बैठा है उसको नहीं देख पा रहा, मैं सीधा केवल यशोदा दास को देख रहा हूँ। And then when he sees Krishna, he will have so many material desires to be fulfilled. और जब वो कृष्ण को देखेगा ऐसा भक्त, तो उसकी बहुत इच्छाएं रहेंगी, भौतिक इच्छाएं भगवान से पूरी करवानी। Long shopping list. बहुत लंबी उसकी लिस्ट होगी। I want this, I want this, I want that.
मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। And then he will only put maybe 10 rupees in the hundi box, but then his desire will be worth crores of rupees. और फिर करोड़ों रुपए की लिस्ट पकड़ा देगा और 10 रुपए की बॉक्स में डाल देगा। Am I like that? क्या हम ऐसे हैं? I should get out of that mentality. हमें इस चेतना से ऊपर उठना चाहिए। I should give everything, surrender everything to Lord Krishna, and Krishna will give me much more. हमें सब कुछ कृष्ण को समर्पित करना चाहिए और कृष्ण ने और भी दे देंगे। I should give my very life to Krishna, हमें अपना जीवन भी कृष्ण को दे देना चाहिए and I will not lose anything. और कुछ भी नहीं नुकसान होगा। In return, Krishna will bless me with love of God. और उसके बदले में कृष्ण मुझे कृष्ण प्रेम दे देंगे। This is the ultimate dharma, according to Bhaktivinoda Thakur. Pure love of God is our genuine dharma. This is our duty. श्रील भक्ति ठाकुर कहते हैं कि हमारा वास्तविक धर्म है वो है भगवान के लिए शुद्ध प्रेम। Not until we come to that platform, then we will come back again and again, the cycle of repeated birth and death in the material world, and having different forms of life according to the desires that we have. जब तक हम शुद्ध भक्त की धरातल पे नहीं आएंगे, तब तक हमें अलग-अलग जन्मों में अलग-अलग शरीर अपने कर्मों के रूप से धारण करने पड़ेंगे। वो इस संसार में फिर से आना पड़ेगा। So we want to taste the real ras, better than Soma ras. Better. तो हम लोग जो वास्तविक रस है उसको पीना चाहते हैं, उसका आस्वादन करना चाहते हैं, जो सोम रस से भी उत्कृष्ट है। Harinam ras हरिनाम रस पीना चाहते हैं and prasadam ras. और प्रसाद रस। Prabhupada says we only need to do two things also, chant Hare Krishna and only take Krishna prasad. प्रभुपाद जी कहते हैं हरे कृष्ण का कीर्तन करो, जप करो और कृष्ण प्रसाद। And we will work our way back to Godhead by doing so. और ये करते करते भगवान वापस चले जाएंगे। Huh? Is that difficult? क्या कठिन है? Where is the difficulty? कहाँ पर है समस्या? There is no difficulty. कोई It is कठिनाई नहीं। only our priority. What is my priority? My material desires or Krishna? Krishna's desire. तो केवल बात प्राथमिकता की है, मेरे लिए क्या प्राथमिक है, कृष्ण भक्ति या भौतिक इच्छा है। If my desire is according to Krishna's desire, that is desireless. अगर मेरी इच्छा वही है जो कि कृष्ण इच्छा करते हैं, तो वास्तव में ये अनिच्छा हो गया, इच्छा ना होने के बराबर। If my desire, oh, someone will sponsor the Sunday, please. अगले संडे के प्रसाद कौन? Maybe he came late, right? If my desire is besides Krishna's desire, therefore I have to take birth again according to my desire to be fulfilled in one of the 8,400,000 species of life. और अगर मेरी इच्छाएं भगवान कृष्ण की इच्छाओं से मेल नहीं खाती, तो मुझे अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा और जिस तरह की इच्छा की है उसी के अनुसार मुझे योनि मिलेगी, शरीर मिलेगा। So I better wake up. तो अच्छा है कि हम जग जाएं। Our eyes are open, but we are sleeping spiritually. हमारी आंखें तो खुली हैं बाहर से, परंतु आध्यात्मिक रूप से सोए हुए हैं। That's why when Bhaktivinoda Thakur says, "Jeev jago, jeev jago, jeev jago." इसलिए श्री भक्ति ठाकुर कहते हैं जीव जागो, जीव जागो। Kota nidra jao maya pisachila kore. That we are all sleeping on the lap. Very nice, comfortable. In the lap of the witch called Maya. श्री भक्ति ठाकुर कहते हैं जीव जागो, तुम माया की गोद में सोए पड़े हो। So what is the cure? तो क्या है इसका उपाय? To chant the holy name of the Lord. हरिनाम का जप करना। Purely. शुद्ध रूप से हरिनाम का No उच्चारण करना। offenses. उसमें कोई अपराध नहीं है। No criticizing devotees. कोई आलोचना नहीं है भक्तों की। Only taking Krishna prasad. केवल कृष्ण प्रसाद पाएं। Serve the Lord in one of the 9 processes of bhakti. नवदा भक्ति के 9 अंग में से एक नए अंग के माध्यम से भगवान की सेवा करें। Read Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita every day. हर रोज गीता भागवतम का अध्ययन करें। And associate with the devotees of the Lord. और भक्तों का संग करें। There is guarantee that at the end of life, Prabhupada says, one will go back home, back to Godhead.
श्री प्रभुपाद गारंटी देते हैं कि यदि कोई ऐसा करेगा तो इस जीवन के अंत में भगवत धाम वापस आ जाएगा। So you're all very fortunate to have a very wonderful temple here. I can feel there's a lot of bhakti here. तो आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप सब इतने अच्छे मंदिर में हैं। महाराज कह रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर भक्ति है काफी इस मंदिर में। Continuously serving the Lord, and definitely you'll make further advancement every day. निरंतर भगवान की सेवा करते रहें और रोज आप भक्ति में आगे बढ़ें। It's like in Jaipur, you know, they have a very popular temple there, Govinda Ji. इस जयपुर में गोविंद जी मंदिर है, बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है। You know what they do? Before they go to work in the morning, they'll come to the temple, and after work, they come to the temple to have darshan of Govinda Ji. तो गोविंद जी के मंदिर में जयपुर के लोग दफ्तर जाने से पहले आते हैं दर्शन करने के लिए और दफ्तर से घर जाते हैं फिर आते हैं दर्शन करने के लिए। If you can do that, अगर आप ऐसा कर पाएंगे, guaranteed you'll go back home, back to God. And if you do that here also, पक्का भगवान है। I guarantee you 100%, because you'll become Krishna conscious by doing so. Your day will start seeing the Lord, and then you end your day seeing the Lord. You go to sleep, you see the Lord. तो महाराज कह रहे हैं, गारंटी दो इस बात की, यदि आप ऐसा करेंगे, सुबह आएंगे, दर्शन करेंगे और यहाँ पे भगवान के लिए गाएंगे, तो आपका पूरा दिन और रात को सोते टाइम, रात को जाने से पहले, घर जाने से पहले फिर दर्शन करेंगे, फिर भगवान का गुणगान करेंगे, तो रात में सपने में आप भगवान को देखेंगे और आप पूरी तरह से कृष्ण भावना में जाएंगे। Hare Krishna. Hare Krishna. धन्यवाद। I think clapping means you will be doing it. ताली बजाने का मतलब वो महाराज कह रहे हैं कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आप स्वागत करेंगे ऐसा। सुबह आएंगे और शाम को फिर से आएंगे। Any questions or comments, reflections? तो बात लोग अपने प्रश्न या कुछ अनुभूतियां हैं वो शेयर कर सकते हैं। Hare Krishna Maharaj, thank you a lot for a wonderful lecture. Maharaj, you explained how there are 3 levels of chanting the holy name. Nama, Yes. So Maharaj, obviously we are on the platform of Nama Prana, and on such a platform that we don't even want to chant the holy name. Yes. So how can we progress? I already gave you the formula. Everything is needed. You have to push yourself, or someone, if you know someone like a good friend who can also make comments how you can make progress, that is ideal. In Krishna consciousness, we need a friend whom we can reveal our mind. It's like right now, our Guru Maharaj is not with us anymore. And very seldom also that we see our Guru Maharaj when he was around. So you must have someone who is far advanced than you do, whom you can always ask if you have any queries or doubts and take guidance from. No one goes back to home, back to Godhead alone. You need a Shiksha Guru. तो प्रश्न जैसा कि महाराज ने बताया कि हरिनाम जप के 3 घाट हैं और हम तो अधिकांश नाम अपराधी कर रहे हैं, तो जब में कोई रुचि भी नहीं है तो नाम अपराध से नामावास में कैसे आएंगे। तो महाराज ने बताया कि इसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी विकास में दिया था और ये भी बहुत आवश्यक है, भक्तों का संग बहुत अधिक आवश्यक है। और सबसे अच्छा है कि यदि आपके पास कोई मित्र हो, भक्तों में कोई ऐसे मित्र हो जो आपको थोड़ा गाइडेंस दे सके, आपको टिप्स दे सके, कुछ सुझाव दे सके, क्योंकि जैसा गुरु महाराज है वो जब जयलीला कर भी रहे थे तो बहुत अधिक तो उनके पास जाके मिल नहीं सकते थे, और अभी तो महाराज प्रकट हैं, तो फिर कोई ना कोई और भक्त होने चाहिए जो भक्ति में हमसे उन्नत हो, जिसको शिक्षा गुरु कहते हैं। तो उनके मार्गदर्शन में रहकर उनसे जिज्ञासा करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। भगवत धाम अकेला कोई नहीं जा सकता जब तक कि उसके ऊपर गुरु की कृपा नहीं है, जिसमें शिक्षा गुरु भी सम्मिलित है।
You will not go back to Godhead, not until you become convinced that I don't want to stay here anymore in this material world. भगवत जाना तब तक असंभव है जब तक हमारे मन में ये भाव नहीं है कि मैं इस भौतिक संसार में बिल्कुल रह ही नहीं सकता। And this can be easily attained also in the association of the devotees. और ये भाव विकसित किया जा सकता है भक्तों के संग में। Most important, association of the devotees. सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भक्तों का संग। But there are different levels of devotees also. परंतु भक्तों के भी अलग धरातल हैं। So you have to be intelligent. Read Prabhupada's books, then you can see and you can tell whom I should associate with. तो आपको बुद्धिमान होना चाहिए कि प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जिसमें मार्गदर्शन कर रहे हैं कि हमें किस भक्त कैसे भक्तों का संग करना चाहिए। Any other points? Questions? Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhu. So I want to know what is the meaning of Atma Sakshatkar. Huh? I want to know the meaning of what is the meaning of Atma Sakshatkar. What is that? What is the meaning of self-realization? Atma Sakshatkar. Self-realization? Yes. Self-realization means knowing Krishna, knowing who am I, what is my relationship with Him, and how to attain love of God. आत्म साक्षात्कार का मतलब हुआ कृष्ण को जानना, अपने आप को जानना, कृष्ण और अपने संबंध को जानना और क्या करूं कि मेरा कृष्ण संबंध जुड़ जाए, इसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। That's another class. इस पे अलग से विस्तार में क्लास हो सकती है। तो और प्रश्न पूछ सकते हैं महाराज से। Abhishek. Hare Krishna Maharaj, thank you for this wonderful lecture. Maharaj, regarding the association of devotees, actually a lot of times I have felt that whenever I kind of meet devotees in temple and the ashray classes, I'm so overwhelmed by their achievements. Whenever you talk to them, they mention so much about their achievement. The other day we had an ashray class and they mentioning let's say they've done a lot in this Kartik month, but yet every time I feel Not so close. okay, Because there is feedback. is it better? When you associate with the devotees, what do they say? When I associate with devotees or whenever I go to my ashray classes or let's say whenever I come to people, I see that they are senior devotees, they're still doing so much for Krishna, they've given up their lifetimes. Yeah. They've done so much, but yet I think I want to do it, but So follow in their footsteps. I want to, but I always feel like something holds me back, whatever it is like me. Your personal ambition. That's the one that's holding you back. What will make us more and more advanced is to set aside our personal ambition. I already mentioned this also. Our desire should be according to Krishna's desire. And if you don't know what is that desire, again you have to ask higher up devotee or even equal level devotee. तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अपना जो व्यक्तिगत एजेंडा है उसको छोड़ दें और जो इच्छाएं भगवान की हैं उसके अनुरूप ही अपनी इच्छाओं को विकसित करें और उसके लिए भक्तों का अपने लेवल के अपने सुगुणत भक्तों का अनुसरण कर सकते हैं। Yes? The only thing that will destroy our movement and our bhakti, if we're not going to make advancement, is because our personal ambition. जो हमारी भक्ति को व्यक्तिगत रूप से या हमारे मूवमेंट को विनष्ट कर सकती है वो एक ही चीज है कि हमारा अपना पर्सनल एजेंडा या एम्बिशन। हरे कृष्ण महाराज। Where are you? Oh, okay. There you Hare go. Krishna Maharaj. Maharaj, we are very closely associated with Guru Maharaj. So it's very auspicious and very enlightening to hear from you. Maharaj, I want to say that I want to ask,
comparatively easy to be a devotee, to be a devotee in the association of devotees. But it's very difficult to be a devotee in the home, in the family, where we are living. We tend to act like a materialistic people. So how to be a devotee in home also? Well, Bhaktivinoda Thakur is a devotee, he is at home also. You see, you have to read and chant, not just chant. You have to read Prabhupada's books. Whenever we read Prabhupada's books, we are associating with Prabhupada. Guru Parampara. Okay, so make this as part of your sadhana. Family that prays together, stays together in Krishna consciousness. So read, all of you should read together before going to work if it's possible. The problem here is you're so busy and your kids are so busy, you don't have time for them. When I travel, this is the number one problem and struggle of the grihastas. They don't have time with their family. Do you have time with your family? Be honest now. You do? What do you do in your time? What do you do? Huh? What? What? Be honest now. Nothing much. Okay, come on, you have to do something. We're not Mayavadis here. We're not Sunyavadis. You just look at each other and don't do anything. You must do something, right? What is it? Do some bhajans, chant together, read Bhagavatam together. Isn't it? Make your life successful by spiritualizing your family. If you cannot do that, fine. It's not possible for everyone. You're lucky you live in India, the land of Dharma. If you cannot do it, then it's going to be very difficult for the whole family to be Krishna conscious. I know some family members, the husband eats meat, and the wife, she's very dedicated. She comes to the Namahata program. Sometimes she will cook also meat for the husband. What to do? Hopefully one day the husband will also become a devotee. That is most difficult, isn't it? Like almost impossible. But if your family members, they are understanding the importance of Krishna consciousness, then it's easy to be Krishna conscious. I mean, it's not accept the way it is. But you should be being the head of the family, you be the role model. Set the best example for everyone. Huh? Not so easy to become Krishna conscious oneself. How about making others to become Krishna conscious? That is most difficult. You're already living under one roof. That is difficult. But it is possible. Krishna will help you if you have that desire and you are sincere. Summary. तो प्रश्न तो ये रहेगा कि महाराज जब हम भक्तों के संग में होते हैं तो भक्ति आसान होती है, परंतु घर में जाते हैं तो बहुत कठिन हो जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि भक्ति ठाकुर को ध्यान दिया कि उनके साथ ऐसा नहीं था, वो तो गृहस्थ थे परंतु पूर्ण रूप में भक्त थे। तो पहला पॉइंट तो ये है कि केवल जप नहीं करें, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करें, क्योंकि घर में
जब प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी का और गुरु परंपरा का संग ले रहे हैं, तो घर में भी भक्तों का संग उपलब्ध है हमारे लिए श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों के माध्यम से। तो इसलिए नियमित रूप से प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करें और साथ में जप भी करें। और साथ में समस्या ये है कि आजकल आधुनिक समय में परिवार में लोगों के लिए एक दूसरे के पास टाइम नहीं है। तो जैसे फैमिली लेट्स स्टे टुगेदर, प्रेज टुगेदर, फैमिली लेट्स प्रेज टुगेदर, स्टे टुगेदर। ऐसा परिवार जिसमें सब लोग मिलकर भगवान का गुणगान करते हैं, वो सदैव भक्ति में इकट्ठे रहते हैं। तो परिवार वालों के लिए समय निकालें, आप हैं, बच्चे हैं, पत्नी हैं, और सब बैठकर, ऐसा नहीं कि बस बैठ के उसको देखते रहें, बैठें, ग्रंथों का अध्ययन करें, परिणाम कीर्तन करें, जप करें। तो इसके माध्यम से हालांकि असंभव लगता है, परंतु संभव है। एक घर में रह के सब लोग मिलकर भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। कई बार तो समस्या इतनी बढ़ती होती है कि परिवार में पति है, वो मांस खाता है, और पत्नी है बहुत अच्छी भक्त है, यहाँ तक कि पत्नी को कई बार इतनी अच्छी भक्त है, पति के लिए मांस बनाना भी पड़ता है, कुक भी करना पड़ता है। तो क्या कर सकते हैं, उसकी परिस्थिति है। तो वो अपनी भक्ति करती रहे, भगवान को प्रार्थना करें और आशा करें कि एक दिन पति भक्त बन जाए। तो हालांकि संभव लगता है कि एक छत नीचे रहकर हम लोग इकट्ठे कैसे भक्ति कर सकते हैं, पर संभव है अगर हमारी सिंसियर डिजायर है और भगवान को प्रार्थना करते हैं और जैसा बताया वैसे करते हैं, तो ये संभव है। Any other points or question, Mataji's? I'm sure they have some question as well. तो जैसे बोलते हैं साधु संग सर्व शास्त्र लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। तो बहुत बहुत ऑस्पिशियस है वास्तव में, जो कार्तिक का महीना मना पा रहे इसलिए क्योंकि बहुत बहुत अधिक कृपा है कि तपस्या सब कुछ कर दी। तो कार्तिक में और तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, वो तपस्या तो पहले कर ली, इसलिए कार्तिक में ऐसे शुद्ध भक्तों का संग मिला है। तो उस संग का पूरा लाभ उठाना, वो वास्तविक भक्ति में आगे बढ़ना। तो प्लीज, आई एम श्योर हर भक्त के जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट होंगे, और जब भारत देश के वरिष्ठ वैष्णव आते हैं, जितने भी हमारे पास प्रैक्टिकल डाउट्स हैं, क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। तो क्या कोई ऐसा है जो बिल्कुल संशय रहित होकर भक्ति कर रहा है? माता जी, माता जी एक विषय है जो संशय रहित होकर भक्ति कर रही है। माता जी ऑनेस्ट होकर रही बोल, बाकी के पास किसके पास कुछ ना कुछ संशय है? हाथ खड़ा करिए, जिसको भक्ति में कुछ ना कुछ संशय, पूरा हाथ खड़ा करिए, पूरा लंबा, तो फिर प्रश्न पूछिए, पूरा लाभ उठाइए। महाराज आए इतनी दूर से, उसका लाभ उठाइए। थैंक यू। इसका लाभ हमारे शुभम प्रभु 30 साल के उनका प्रश्न। Hari Bol. Very thank you. Thank you for your wonderful lecture. Maharaji, what are the symptoms of Namabhas stage? Namabhas, you're free from anxiety. तो नामभास के क्या लक्षण है? पहली बात तो चिंताओं से मुक्त है। Actually, Ajamil, he was in the Namabhas stage. That's why he was freed from the Yamadutas. तो अजामिल है वो नामभास के स्तर पर था, इसलिए यमदूतों से छूट गया वो। Yeah, he was in the Namabhas. Namabhas means you are liberated, but you have no love of God. नामभास का मतलब है आप मुक्त हो गए हैं गुणों से, परंतु भी भगवत प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। You know what to do and what not to do. But see, Ajamil, he was committing sin, but he does not know that that is sin. And he was chanting the name of Narayan not to cover up his sinful activities. अजामिल पाप कर रहा था, परंतु उसको पता नहीं था कि वो जो कर रहा है पाप, जो कर रहा है वो पाप है। और जब नारायण नारायण पुकार रहा था, तो इसलिए नहीं पुकार रहा था कि उसके पाप में भूल जाए। One should be very careful. One should know what to do and what not to do by reading Srila Prabhupada's books. तो श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने से हमें पता चलेगा कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। Yes, Namabhas means no offenses anymore. नामभास का मतलब हुआ और कोई भी अपराध नहीं, But he has not reached Krishna Prem. परंतु भी कृष्ण प्रेम नहीं विकसित हुआ। That is the difference. ये अंतर है। That's why Ajamil, he had to go to Haridwar to do bhakti. फिर इसलिए अजामिल जब ये दूसरे छूट गया तो फिर हरिद्वार गया और वहां जाकर उससे भक्ति की।
to finish everything in that lifetime, and then he went back home, back to God. और फिर उस जीवन में सब उसने कार्यकाल समाप्त करके भगवतान वापस गया। One who's in the Madhyam platform, he can be in the Namabas. तो मध्यम धरती पे एक भक्त जो है वो नामवास के स्तर पे आ सकता है। Neophyte cannot be in the Namabas. जो कनिष्ठ भक्त है वो नामवास नहीं कर सकता। On the other hand, he's always very offensive. कनिष्ठ भक्त तो सदैव अपराध करता रहता है। But how can he make progress? तो कैसे आगे बढ़ेगा? Yes. Thank you, Maharaj, for a wonderful association and very nice class, Maharaj. But my question is that Chaitanya Mahaprabhu gave this process of chanting and cultivating Krishna consciousness, and he says that a very fortunate soul is fortunate because he gets Bhakti beach, and he says we need to water it every day. At the same time, you should be careful not to water the weeds. So, Maharaj, how to be able to very clearly know that the process watering that I am doing is not actually ending up watering the weeds rather than the Bhakti itself. Hindi. तो प्रश्न ये है कि महाराज सत्संग आपका धन्यवाद, आपने बहुत ही सुंदर क्लास दिया, बहुत अच्छा हमें बताया। और हमारे प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमें हरिनाम जप करना चाहिए और भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, और बहुत बहुत सौभाग्यशाली जीव हैं जिनको भक्ति लता मिलती है गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से, और जब वो भक्ति लता मिलती है तो उसमें हमें पानी देकर उसकी सिंचाई करनी चाहिए। तो महाराज हम कैसे देख पाए कि हम पानी दे रहे हैं वो भक्ति लता में जा रहा है या उसकी जो उप शाखाएं हैं उस पर तो नहीं जा रहा? If my material desires are increasing, that means I'm watering the wrong plant. That means that I'm watering the unwanted plants or weeds. अगर मेरी भौतिक इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं तो इसका मतलब मैं भक्ति लता को नहीं परंतु जो उसकी उप शाखाएं हैं उनमें जल दे रहा हूं। Chanting the holy name of the Lord fulfills everyone's desires, both material and spiritual. हरिनाम का जप करने से हर किसी की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक। If my material desires are increasing and I'm doing bhakti and I mistakenly think that I should continue doing bhakti so that my material desires will become fulfilled, it's going in the wrong direction. अगर हम भक्ति कर रहे हैं, हरिनाम जप कर रहे हैं और भौतिक इच्छाएं बढ़ रही हैं और हम सोच रहे हैं भक्ति करते रहते हैं और भौतिक इच्छाएं और बढ़ेंगी तो ये गलत दिशा है। That happens. Many of our devotees, they came to Krishna consciousness, zero balance, maybe even negative balance. But then once they start performing, not even bhakti, just beginning, attempting to do bhakti, we find them, they become very opulent, having big houses. But then they will forget bhakti. Real purpose of bhakti. They were still trying to do bhakti and thinking that, this is working. I am becoming materially prosperous. So bhakti must be really good. But you are mistaken, my dear sir. Because pure bhakti will give love of God. Mixed bhakti will give you material opulence. तो कई बार देखते हैं कि हमारे आंदोलन में भक्त आते हैं और उनका कार्मिक बैलेंस या अकाउंट देखा जाए तो शून्य है या नेगेटिव है, परंतु जब भक्ति थोड़ी सी भक्ति की प्रक्रियाओं का पालन करते हैं उससे उनको बहुत अधिक ऐश्वर्य मिलना आरंभ हो जाता है। कई बार ऐसे भक्ति होते हैं, बड़े बड़े घर भी उनके बन जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, सोचना चाहिए कि यही हम किसी ऐश्वर्य में फंस जाएं और जो भक्ति की वास्तविक प्रणाली है वो हमसे पीछे छूट जाए। So which one is your choice, material or spiritual? तो हमारी क्या वास्तव में हमारी स्वतंत्र इच्छा है कि हम भौतिक रूप से संपन्न होना चाहते हैं या आध्यात्मिक रूप से संपन्न होना चाहते हैं? Real wealth and real opulence is having Krishna within your heart, realizing Krishna within one's heart. तो जो वास्तविक संपत्ति है वो कृष्ण का साक्षात करना अपने हृदय में। Look at Kolavecha Sridhar.
खुला हुए शिला को उदाहरण देते हैं। Is he a crorepati? Is he a billionaire? क्या करोड़पति है, अरबपति है खुला हुए शिला? No, but he won the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu. परंतु नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल गरीब है, परंतु चैतन्य महाप्रभु का हृदय जीत लिया। When he drank, Lord Chaitanya Mahaprabhu drank from the water pot, which is beaten. You know, it's like, we have this stainless steel and you drop it, it'll get, dented. Kolavecha Sridhar's water pot is dented all over the place. But when Lord Chaitanya Mahaprabhu drank from that water pot, tastes like nectar. खुला हुए शिला के पास एक ही मग था पानी पीने के लिए, और वो मग भी चारों तरफ से टूटा था, डेंटेड था, टेढ़ा मेढ़ा हो रखा था, और चैतन्य महाप्रभु उस इकलौते मग से पानी पी रहे थे, और उनको ऐसा लगा कि मैं अमृत का पान कर रहा हूँ। You may have a golden pot, water pot, but if you have so much sinful desires and material desires, that water will taste like poison. हो सकता है आपके पास सोने का मग हो पानी पीने के लिए, परंतु यदि आपकी इच्छाएं भौतिक हैं, भौतिक जगत में आगे बढ़ने की हैं, तो फिर उस सोने के मग में पीता हुआ पानी भी आपको जहर की समान लगेगा। So which one is better taste? The one who has bhakti and has beaten up water pot, and a materialistic devotee who's having a golden pot with water, which one you will take it from? तो आप इसमें से जल पिएंगे, एक भौतिकवादी भक्त जिसके पास सोने का मग है और उसमें पानी है जो कि विष के समान है, या फिर एक दरिद्र भक्त है परंतु भक्ति में उन्नत है, उसका टूटा हुआ मग है परंतु हृदय कृष्ण से भरा हुआ है, तो किस मग में आप लेंगे? Or you think that the water in the golden pot will taste better than the water that is contained in a beaten up water pot that belongs to a pure devotee? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं लगता आपको कि जो सोने के मग के अंदर पानी है वो अधिक बढ़िया होगा बजाय उसके जो कि शुद्ध भक्त के हाथ में टूटा हुआ मग है उसके अंदर पानी? Yes? Samasta hai? Yes? Okay. Anything else? Okay, last two questions. You already asked a question. One Mataji there and the microphone. Where is the microphone? Okay, Prabhuji, give it to him, and then Mataji, she has the last question at the back. Boliye. Hare Krishna Maharaj, Hare Ram. please accept my humble obeisances. My question is how to improve our day-to-day decision making so that we can align our desires to Krishna's desires. The Guru has instructions. Srila Prabhupada, he gave everything in his books. So the real knowledge of what to do and what not to do is the application of what you've read and what you've heard from the sadhus. Okay? It is not theoretical. What we need is practical application of this knowledge. That is more important. प्रश्न ये है महाराज की जो दिनचर्या है उसमें कैसे हम निश्चित करेंगे क्या सही है और क्या सही नहीं है ताकि हमारी इच्छाएं कृष्ण से अलाइन रहे। तो महाराज ने बोला कि बिल्कुल सही है, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वास्तविक उसको करना जो शिक्षा मिली है बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो श्रील प्रभुपाद ने सारी इंस्ट्रक्शंस दी हैं, हम प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते हैं और भक्तों से श्रवण करते हैं तो फिर व्यावहारिक रूप से हम जान पाते हैं कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। And ultimately, if you really don't know what to do, you need a guru. और फिर अगर ये सब करने के बाद भी आप नहीं जान पाते कि मैं क्या करूं तो फिर आपको गुरु की आवश्यकता है। An instructing guru and the one who gives initiation. दीक्षा गुरु की आवश्यकता है और शिक्षा गुरु की आवश्यकता है। Usually the one who gives instructions becomes your Diksha Guru. कई बार जो आपको शिक्षा देते हैं वही आपके जाके दीक्षा गुरु होते हैं। You can have unlimited Siksha Gurus, but you can only have one Diksha Guru. आपके बहुत सारे असंख्य शिक्षा गुरु हो सकते हैं और फिर उन्हीं में से कोई एक ही आपके दीक्षा गुरु हो सकते हैं।
You can only have one mother where you came out from the womb, but you can have unlimited fathers. आप केवल एक ही माँ हो सकती है जिनके आप गर्भ से आए, परंतु आपका पालन करने वाले बहुत सारे पिता हो सकते हैं। Because mothers, they can have so many husbands also. क्योंकि माताओं के भी कई हो सकते हैं, one after the other. एक के बाद एक पति। Okay, one last question right there. Our photographer. Are you the photographer? Please pass the mic. Hare Krishna Maharaj, thank you for your kind association in a wonderful class. Maharaj, for performing bhakti, it is important that we do not commit offense. While performing bhakti, it is important that we do not commit offense towards the holy name and the Vaishnavas. But in certain situations, there are differences among devotees. Really? There are differences? While practically doing services, there might be differences among devotees, and also sometimes it happens in the name of Vaishnava Aparadh. This exploitation of devotees, that if you are not doing this, you are committing offense towards devotees. If you are not doing this. Example? I don't want to discuss. Then there is no question. You have to give even a small example. For example, because of certain reason, because of certain reason. Like what? Maybe health issues. Huh? Maybe health issues. A devotee is not able to go and perform some service. Yeah. And then gets to listen that since you are not able to come and do this service, you have committed offense, or you are not following your authorities, or you are not doing this. You're allowed to have one time, but to do it regularly, and then that is not good. Sometimes it happens that some other person is giving you some service and another person is also giving No, you should service. only do what you're supposed to do. Okay. Don't take up so many things on your plate and you cannot eat the whole feast. So, but when we say no to someone, that You can say no. You can say no. Learn how to say no. If you just say yes, 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 then aparadh is happening, then that is not good. To say no is not an offense. But to say no, if you can do it, then you are missing the opportunity to serve the Lord. Okay. I know some devotees, they want to take Brahman initiation, promise to do deity service. In the beginning, very enthusiastic. After 3 months, Hare Krishna. I am busy. Too much things to do. But I'm a Brahmana. That's not supposed to be. One can go back home, back to God, just by chanting the holy name of the Lord. Alone. One not need to be a Brahmana to go back home, back to Godhead. We think that, oh, I'm a Brahmana. Hey, I'm a Brahmana, see? But you don't do anything. Okay. Now it's a long translation. See if you can just, that is the last one. This is the last question. तो प्रश्न है कि महाराज कई बार वैष्णव अपराध से कैसे बचें, क्योंकि अलग अलग मत हो जाते हैं कई बार सेवा करते हैं भक्तों के बीच में। तो महाराज का उदाहरण ये है कि महाराज मान लीजिए कभी किसी भक्त का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और फिर वो सेवा में नहीं जाते, जो सेवा के अधिकारी हैं वो कहते हैं आपने वैष्णव अपराध कर दिया, आप सेवा में नहीं आए, तो ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप अपनी अथॉरिटी की बात नहीं सुनते, वैष्णव अपराध है। तो मान लीजिए कि एकाकार ऐसा हो रहा है, स्वास्थ्य सही नहीं है और सेवा नहीं आ रहे, तो ठीक है, परंतु बार बार हो रहा है तो ये भी बात सही नहीं है। तो
फिर माती ने प्रश्न पूछा कि महाराज कई बार ऐसे होता है कि दो अधिकारी हैं सेवा के और एक कुछ बोलते हैं और दूसरे कुछ बोलते हैं और हम कैसे करें? तो महाराज ने बोला मना करना सीखिए। यदि आप प्लेट में उतना ही भोजन कीजिए जितना आप खा सकते हैं। आप जो सेवा कर नहीं सकते उसको विनम्रता से आप मना कर सकते हैं। मना करना अपराध नहीं है, परंतु यदि करने की क्षमता है और मना करते हैं तो वो सही नहीं है। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया, कई बार भक्त हैं बहुत उत्साही होते हैं कि हमें ब्राह्मण दीक्षा लेनी है और उत्साह ब्राह्मण दीक्षा लेने के 2 या 3 महीने बाद उतर जाता है। ब्राह्मण दीक्षा से पहले कहते हैं कि हम आएंगे, विग्रहों की सेवा करेंगे, और 3 महीने बाद कहते हैं इतने व्यस्त हैं हम कैसे आए? तो महाराज बोल रहे हैं भगवतधाम जाने के लिए ब्राह्मण दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। भगवतधाम जाने के लिए हरे कृष्ण नाम अपने आप में पर्याप्त है। धन्यवाद, शुक्रिया। Very wonderful, very mature guidance on all these questions that came up, and a very nice lecture, which was very inspiring for us. That we have to go beyond the rus of wine and liquor. We have to go beyond the rus of Soma, and we have to taste the rus of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Which we can do only and only when wonderful senior Vaishnavas pure devotee Islam and bless us with these steps, with this guidance. Thank you so much, Maharaj. महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज ने बोला कि शराब के नशे से ऊपर उठना है, सोमरस के नशे से ऊपर उठना है और हरि नाम के रस का आस्वादन करना है। वो ऐसे महान वैष्णव आते हैं, उनका संग करते हैं, जो श्रवण करते हैं, वो उत्साह मिलता है कि श्रीनाथ का रसम कर पाए। तो महाराज जी का हार्दिक धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, Hare Ram, राम राम हरे हरे। इस वजह से धरती अपने जनार्दन साईं महाराज जी की, श्री प्रभुपाद की, हम गौर भक्तवृंद की, जय हो प्रेमानंद। हरि ओम। हरि